हाँ, मैं ट्राई करती हूँ स्क्रीन शेयर करने का। 1 मिनट दीजिए मुझे। स्क्रीन मेरी विजिबल है क्या आपको सबको? यस यस। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। सो हाय एवरीवन। अगर आप लोगों में से कुछ लोग थोड़ा इज इट ओके इफ सम ऑफ यू टर्न ऑन योर कैमरा सो आई नो दैट आई एम स्पीकिंग टू रियल पीपल? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। Okay, so hi everyone. मेरा नाम my name is Sayuri. सपना दी, यस यस। ये completely इंग्लिश में होना चाहिए या मतलब हिंदी में कैसे मतलब प्रेफर करेंगे आप? वो तो मुझे हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो सकता है ना। अच्छा, ठीक है। आपको जैसे और अच्छा, मतलब बच्चे ज्यादातर हिंदी इंग्लिश मिक्स में अच्छा रहेगा। सो मेरा नाम सायूरी है और मैं मैं नागपुर से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए चाइनीज में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया। और मैं अभी यूलियस मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्सबर्ग में चाइनीज स्टडीज में मास्टर्स कर रही हूँ। और आई मीन ये बहुत कॉमन फील्ड नहीं है, भले ही मतलब प्रोग्राम्स काफी ऑफर किए जाते हैं इस फील्ड में, बट स्टिल ये जितना मतलब इट इज नॉट एज पॉपुलर एज अदर फील्ड्स राइट नाउ। और मुझे अपना मैं आपको मैं क्या पढ़ रही हूँ उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मतलब बताना चाहूंगी। तो मैं चाइनीज स्टडीज कर रही हूँ एंड चाइनीज स्टडीज मींस ये थोड़ा फील्ड स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टडी है। एंड मेरा प्रोग्राम दो फील्ड्स में डिवाइडेड है। एक है एक जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक से रिलेटेड, जो लोग चाइना से रिलेटेड स्टडी करेंगे उन लोग के लिए मतलब एक स्लॉट ऐसा है, एक डिवीजन है। और दूसरा जो डिवीजन है वो है उन स्टूडेंट्स का हु आर गोइंग टू बी डीलिंग विद स्पेसिफिकली विद द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ चाइना। सो मेरा हिस्टोरिकल ट्रैक है। और uh, um, और मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च क्या होगा, बट मैं ये इसलिए परस्यू कर रही हूँ ताकि मुझे मतलब चाइना से रिलेटेड रिसर्च फील्ड में मैं काम कर सकूँ। और सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट द मोमेंट। मैंने जो भी मतलब आज कंपाइल किया है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब मैं अपने बैचलर्स से लेके अभी तक जो भी मैंने खुद के लिए मतलब मेरे रिसर्च में मेरे करियर को मुझे कैसे शेप करना है उसके लिए जो मैंने रिसर्च किया है उससे मुझे जो मेरा अंडरस्टैंडिंग इस फील्ड का बना है, तो उस तरह से मैंने मतलब इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया है। और काफी कुछ है मुझे और भी सीखने को। सो मैं आपको जो प्रेजेंट कर रही हूँ इट इज हाउ एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ दिस फील्ड एंड व्हाट आई थिंक आर लाइक द करियर अपॉर्चुनिटीज। सो that's it, and I think we can go forward now. So I'm sorry, I'm going to start with like some really basic things because मैं कुछ दिनों पहले मैं किसी से बात कर रही थी and people are a little confused about, I mean although China काफी फेमस मतलब कंट्री है, मतलब काफी बड़ा कंट्री है और काफी इम्पोर्टेंट भी कंट्री है, बट फिर भी लाइक काफी लोग नहीं जानते हैं। सो
as you can see on my screen, its official name is People's Republic of China, and ये East Asia में located है, और capital is Beijing, and it's उनका government जो है वो communist government है, और it is led by the Chinese Communist Party, and their president is Xi Jinping. Next I would like to tell you about Taiwan. So Taiwan का official name Republic of China है, और वो भी East Asia में located है, और उसका capital Taipei है. ये जो नीचे में है ये कोई मतलब डाउनलोड ड्रीम्स टाइम, ये मतलब I just downloaded this picture from the internet, so it does not have any significance as such. So that's what it is. And Taipei उसका Taiwan का capital है, और it's a democratic country, and उनके president का नाम Tsai Ing-wen है, and she is the first female president of Taiwan. And we can now move on to the next thing. So ये kind of ज़्यादा ही मतलब straightforward introduction है मुझे लग रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी को? विष्णु, आपको चेक करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन तो दिख रही है, सबको दिख रही है. और कोई है जिसे नहीं दिख रही है? ओके. Okay, cool. So Chinese is quite a different language, I feel. मतलब हम लोग जो हिंदी और मराठी, मतलब मैंने हिंदी और मराठी और इंग्लिश तीन ही लैंग्वेजेस पढ़े हैं चाइनीज के अलावा. तो ये मतलब हिंदी में जो हमारी वर्णमाला, हिंदी मराठी में हम लोग वर्णमाला सीखते हैं, और फिर मतलब ये सब क ख ग अ ब क ड, ये सब, ये जो कुछ भी है मतलब अ आई, ये सब सीखते हैं. तो मतलब ऐसे मतलब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स चाइनीज में नहीं है. इट्स क्वाइट डिफरेंट. सो मतलब काफी बार मुझे लोग पूछते हैं, अच्छा तुम्हें चाइनीज आती है, तो तुम मुझे अपना मेरा नाम चाइनीज में लिख के दिखाओ. तो मतलब ये ऐसे काम नहीं करता है. चाइनीज ये मतलब एक काफी डिफरेंट लैंग्वेज है हमारे अलग अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में. मतलब हिंदी, इंग्लिश और मराठी के कंपैरिजन में अगर मैं करूँ इन्हें कंपेयर, तो इसमें मतलब हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं एंड टोन्स होते हैं. एक स्पेसिफिक सेट ऑफ साउंड्स हमें चाइनीज लैंग्वेज में मिलता है, और वो साउंड्स जो है मतलब उन्हें 4 टोन्स, मतलब उन्हें ये हमें 4 स्पेसिफिक टोन्स है चाइनीज में, जिनमें उन्हें डिवाइड किया गया है. सो हर एक टोन मतलब एक अलग मीनिंग सिग्निफाई करता है. एंड अगर हम राइटिंग सिस्टम में देखें तो इवन जो कैरेक्टर्स है वो पिक्टोग्राम्स है. मतलब दे बेस्ड, आई मीन वो कोई मतलब अगर डिटेल में जाए तो काफी मतलब काफी डिटेल में नहीं जाएंगे हम अभी, सॉरी. सो ये जो है, ये हम पुराने एकदम एंशियंट चाइनीज टाइम पे जो लोग एक प्रॉपर स्क्रिप्ट डेवलप होने से पहले लोग जो मतलब ड्राइंग्स बनाते थे, वो मतलब चीजें कैसे डिस्क्राइब करते थे, उस अगर मतलब वो चीजें जैसे डिस्क्राइब करते थे उस तरीके से मतलब ये लैंग्वेज ऐसे डेवलप हुई है. मतलब जो पेजेंट कल्चर वगैरह है उससे मतलब ये लैंग्वेज डेवलप हुई है. मैंने दोनों ही चीजों का मिक्सचर कर दिया, बट आई वुड लाइक टू गो बैक टू द टोनल पार्ट. सो चाइनीज में 4 टोन्स है, और स्क्रीन फिर से किसी को नहीं दिख रही है? और किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? यहाँ पे तो दिख रही है. आप एक काम करो, आप बंद करके फिर से शुरू करो, लॉग इन करो. ओके. सो
मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी चाइनीज के 4 टोन्स का। सो फर्स्ट टोन जो होता है वो फ्लैट टोन होता है। सो ये एक साउंड है मा। सो इसे हम अगर फ्लैट टोन में कहते हैं तो फर्स्ट विल बी मा। सेकंड इज द राइजिंग टोन, so it will be ma, and the third will be the rising and falling tone. uh, हाँ it's हेलो rising. हेलो सयूरी जी, Yeah. ये आप चेंज कर रहे हो क्या स्लाइड? वो नहीं नहीं, हो मैं रहा है चेंज मुझे। नहीं कर रही हूँ, मैं सेम हाँ, स्लाइड पे हूँ। तो वो उनका वो प्रॉब्लम है, Okay. उनको लग रहा है कि आप चेंज कर रहे हो और No, उनको no, नहीं। no, no, I'm on the same slide. ओके। Okay. तो मतलब जो थर्ड टोन है वो राइजिंग एंड फॉलिंग है, तो मतलब इट साउंड्स लाइक मा। एंड द फोर्थ टोन इज द फ्लैट टोन, इट्स मा। तो मतलब ये सारे जो टोन्स है, ये मतलब इसे हम मिक्स नहीं कर सकते। अगर हम मिक्स करते हैं तो मतलब वो गलत कुछ मीनिंग हो सकता है, बिकॉज जो फर्स्ट फ्लैट टोन है माँ, तो यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर का एग्जांपल दिया है। तो फर्स्ट माँ वुड मीन मदर, द सेकेंड माँ वुड मीन अ हेम्प, एंड द थर्ड माँ माँ would mean a horse, and the fourth one, ma, means to curse somebody or to scold somebody. So अगर मैंने एक combination में मतलब I can use like 3 of these characters and we can form a sentence right here. Like मैंने यहाँ पे एक example दिया है, ma 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 ma. So it means mother is scolding a horse. So I'm just doing this so that आपको एक example, एक sense मिले कि what does this language sound like. uh, yes. Or we can now move on to the writing system, I think. So writing system जो है वो characters है, and every word, everything has a different, every word has a different character. And यहाँ पे मैंने example दिया है, so you can see how it ये कैरेक्टर्स मतलब कैसे दिखते हैं। और ये कैरेक्टर्स मतलब आप अभी सोच रहे होंगे कि हर सभी वर्ड्स के लिए एक डिफरेंट कैरेक्टर है, तो मतलब इसे याद कैसे करते हैं। तो मतलब ये बहुत ही मतलब कैसे कह सकते हैं, मेरे लिए तो काफी मतलब चाइनीज सीखते समय काफी मुश्किल ऐसा था इन्हें सीखना। तो ये यहाँ पे मतलब जो कैरेक्टर्स है उनके लिए एक रेडिकल्स होते हैं, मतलब एक रूट वर्ड काइंड ऑफ एक होता है। एंड रेडिकल्स जो वो एक कॉम्बिनेशंस में हम कैरेक्टर्स लिखते हैं। लाइक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें एक एलिमेंट होता है जो फोनेटिक एलिमेंट होता है उस वर्ड का, और दूसरा एलिमेंट होता है जो मीनिंग बताता है वर्ड का। तो ऐसे मतलब कई सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होता है। कुछ कुछ वर्ड्स जो होता है सिर्फ मतलब पिक्टोग्राम्स होता है, वो मतलब हमें साउंड नहीं बताते वो वर्ड का। लेकिन वो जस्ट मतलब उसका एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन होता है किसी एक सर्टेन वर्ड कैसा मतलब दिखेगा। सो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू गेट अ होल्ड ऑफ इट देन वो काफी मतलब इजी हो जाता है। बट कैरेक्टर्स सबसे टफेस्ट पार्ट है। मतलब चाइनीज बोलना सच में काफी टफ है मैं कहूंगी, बट मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज ये एक स्ट्रगल है जो मतलब हमें एक पॉइंट, हम अगर चाइनीज पढ़ने के में एक पॉइंट अगर हम लोग एक ऐसा मंजर हम रीच करते हैं जब हम लोग एक्चुअली थोड़ा बहुत सीख जाते हैं चाइनीज, तब उसके बाद देन लाइक आपको मतलब उसे कैसे पढ़ना है, उसे कैसे समझना है, उसे कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, उसका पढ़ने का मेथड कैसा है, ये सब अगर हम लोग एक बार सीख जाए तो मतलब वो काफी मतलब इजी हो जाता है। ये एक पार्ट है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। So I have listed out a few reasons why we should learn Chinese language, and ये काफी मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने मतलब इंडिया स्पेसिफिक बनाया है इसे। मतलब ये काफी कॉमन नॉलेज है कि Chinese language has 1.3 billion native speakers around the world, or 199 million non-native speakers.
और आई मीन एंड द सेकंड जो मेरा कंक्लूजन है कि हमें जो मेरा रीजन है कि वाई हमें क्यों चाइनीज लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, वो मतलब ऐसा है कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। हम एक जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज इज नॉट लैंग्वेज जो है वो उसके सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उससे फ्री नहीं होता है। बहुत सारी कल्चरल एंड बहुत सारी सोशल चीजें होती है जो मतलब एक लैंग्वेज से जुड़ी होती है, एक रीजन से जुड़ी होती है। तो हमें अगर हम जब हम वो लैंग्वेज सीखते हैं तब मतलब हम तभी हम मतलब उस उन चीजों को समझ पाते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मतलब कुछ चीजें मतलब ट्रांसलेशन में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक ऐसा फ्रेज है। तो कि मतलब वो हर एक लैंग्वेज का एक कल्चर है जो दूसरे कल्चर में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक मेरे प्रोफेसर ने मैं जब बैचलर्स में थी तब मुझे एक एनेक्डोट बताया था कि एक डिप्लोमेटिक ट्रेड लेवल का डिस्कशन हो रहा था इंडिया एंड चाइना के बीच में। और एक तब मतलब कोई अग्रीमेंट नहीं रीच कर पा रहे थे। और उस समय कोई इंडियन जो इंडियन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे वहां पे उस नेगोशिएशंस में, तो उन्होंने हिंदी में कहा कि ये छोटा छोटा मोटा ही तो व्यापार है, हम इतना क्यों मतलब इसे उलझा रहे हैं। तो जो चाइनीज काउंटर पार्ट्स थे, उनके जो ट्रांसलेटर्स थे, तो उन्होंने मतलब इस छोटे मोटे को मतलब लिटरल सेंस में ले लिया कि शॉर्ट एंड फैट। सो उन्हें लगा कि ये हमारे मतलब लोगों का तो नहीं मजाक उड़ा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब हम छोटा मोटा इज लाइक बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब मामूली सा ही कोई ऐसा मतलब व्यापार की बात चल रही है। सो दिस इज जस्ट समथिंग लाइक दैट इज प्रॉब्ली, आई डोंट नो इफ इट्स ये करेक्ट एग्जांपल है या नहीं, बट कुछ चीजें होती है हमारे कल्चर में जो दूसरे कल्चर में नहीं एग्जिस्ट करती हैं। एंड उन्हें समझने के लिए हमें लैंग्वेज सीखना काफी जरूरी होता है। एंड मतलब ये भी समझने के लिए कि वो जो लोगों का अगर हमें दूसरे उन कंट्री के डिप्लोमेट्स को अगर समझना है तो उनका मतलब अपब्रिंगिंग कैसा है, वो कैसे कल्चरल इसमें बड़े हुए हैं, बिकॉज कल्चरल हमारा बैकग्राउंड हमारे अंडरस्टैंडिंग को बहुत शेप करता है। तो ये इसलिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला जो होगा मतलब लाइक ग्लोबली चाइना काफी इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ट्रेड और इकोनॉमिक्स इन सब चीजों में। सो आई मीन देर इज कोई ऐसा फील्ड नहीं है ग्लोबली जहाँ पे मतलब हम लोग बिना चाइना का मतलब इन्वॉल्वमेंट के मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, आई मीन हर एक फील्ड में चाइना अभी मतलब मौजूद है। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें, चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सारे मतलब जो भी मतलब चीजें हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, सो हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि चाइना का इस चीज में क्या स्टैंड पॉइंट होगा। एंड ये हमें मतलब फ्यूचर को ये कैसे या फिर फॉरेन पॉलिसीज या फिर कोई भी जो भी मतलब फ्यूचर है उसे कैसे अफेक्ट करेगा। ये है। और ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स में चाइना इज वेरी काफी मतलब इम्पोर्टेंट है ग्लोबली इसका। और अगला है कि इंडिया एंड चाइना, आप अगर हम सब न्यूज़ देखते हैं तो हमने काफी न्यूज़ पढ़ी है। एंड ऑल्सो लाइक एक मतलब एक बहुत कॉमन फ्रेज है हिंदी चीनी भाई भाई, विच इज ऑल्सो वेरी पॉलिटिकल। एंड चाइना इंडिया के लिए पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो बॉर्डर्स है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो 3488 किलोमीटर्स की हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एंड बॉर्डर इश्यूज जो है हमारे वो मतलब काफी टाइम से अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। एंड आई थिंक
काफी स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि मतलब देर आर नॉट अ लॉट ऑफ इंडिया डज नॉट अंडरस्टैंड चाइना एज वेल एज चाइना अंडरस्टैंड्स इंडिया, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज स्पीकर्स, बिकॉज ये मतलब रिलेट करता है जो सेकंड मैंने रीजन दिया था उससे। तो तो मतलब to understand China, to understand, to even like deal with it diplomatically, that Chinese language काफी ज्यादा मतलब important है। और जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें ही कवर कर दिया, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए भी चाइनीज लैंग्वेज स्पीकर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज एक और चीज मैं मतलब बताना चाहूंगी कि बहुत सारे जो कंट्रीज है ग्लोबली, लाइक मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया ने अपने स्कॉलर्स जो है, आई थिंक 70s में इंडिया अपने स्कॉलर्स को चाइना भेजने लगी, उन्हें चाइनीज सिखाने लगी, सो दैट हम लोग डिप्लोमेटिकली वो हेल्प कर सके उनकी। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट चाइना इंडिया ने करना चाहिए चाइनीज लैंग्वेज स्कॉलर्स डेवलप करने के लिए, उतना इंडिया नहीं कर रहा है। उसी मतलब उसके कंपैरिजन में एक एग्जाम्पल है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब आई थिंक 1980s में ऑस्ट्रेलिया ने अपने फर्स्ट मतलब जो कोई भी स्कॉलर्स है उन्हें स्कॉलर्स को मतलब ट्रेन करना चालू किया चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज स्टडीज में। और मतलब दे काइंड ऑफ अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ इट, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू द for them, like diplomatically, for their international politics, for their relations, कि मतलब they encourage their students, उन्होंने इतना ज्यादा उनके स्टूडेंट्स को encourage किया कि one of their presidents, like 2 or 3 prime ministers of I I mean, I think not the present Prime Minister of Australia, but um, there was a Prime Minister of Australia who was actually trained in Chinese studies, and he could actually speak Chinese. So I mean that because China हमारे लिए इतना important है, तो हमें उसके तो हमें I think we should also be able to produce a prime minister, or maybe like some important diplomats who actually are like very well trained in Chinese language and Chinese history, culture, and all other aspects of China. So this is ये सिर्फ मतलब मेरा एक just a minute. ये सिर्फ मैंने लिस्ट बनाया है, लाइक मेरे मुझे लगता है जो यूनिवर्सिटीज काफी। सयूरी जी, हाँ आपका जी, वो लिस्ट आप चेंज कर रहे हो प्रेजेंटेशन? हाँ मैंने अभी चेंज किया। आपको मतलब आप कहाँ पे है? अभी विजिबल नहीं दिख रहा, आपका एक ही स्लाइड दिख रहा है, वही कौन सा? चाइनीज वाला, लैंग्वेज वाला फर्स्ट जो सब पेज है ना, वही आपका विजिबल है सबके लिए। मैं वो हो फिर नहीं से रहा है, शेयर करती हूँ। आपने यहाँ पे मैसेज भी रिज्यूम शेयर करके ऑप्शन आया है। आई एम सॉरी। अभी है, अभी दिख रहा है। ओके, सॉरी। सो ये मैंने जस्ट ये 3 यूनिवर्सिटीज जो मेरे अकॉर्डिंग 3 यूनिवर्सिटीज है ये जो काफी अच्छी, जहाँ पे मतलब चाइनीज काफी अच्छी तरह पढ़ाया जाता है इंडिया में। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो
अभी दिख रहा है ना आप सबको स्क्रीन मेरा? हाँ अभी आई एम सॉरी, वो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया था अचानक से। तो मैं एक और एक मतलब लाइक लिंक शेयर कर रही हूँ, ये मतलब कि कौन से यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज इंडिया में। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है ग्रेजुएशन, और यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी भी ऑफर किया जाता है चाइनीज में। और फिर उसके अलावा विश्व भारती है, और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। काफी सारे मतलब जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, और आई मीन जहाँ पे मतलब काफी अच्छा चाइनीज स्टडीज सिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू मी, ये है। लेकिन ये मतलब अपने इंटरप्रिटेशन पे भी लोगों के डिपेंड करता है। सो दैट इज ओपन, दैट इज डिबेटेबल, लाइक आप मेरे मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ये हम लोग फाइनली अपने मेन टॉपिक पे जा रहे हैं अभी। ये सो करियर जो अपॉर्चुनिटीज है, तो मैंने अभी इन्हें मेरे अकॉर्डिंग ये दो हिस्सों में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। एक है एकेडमिक बैकग्राउंड एंड दूसरा मतलब नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड। सो मतलब नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है मतलब जो जिन्होंने हम इसमें हम डिप्लोमा कोर्सेज भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ये सिर्फ मतलब कुछ लोग जो है जो खुद से सीखते हैं, मतलब जो दोज हु डू नॉट हैव अ प्रॉपर मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह से जो लोग नहीं सीखे हैं, दे ऑल्सो हैव लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट देन वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़े मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड जिनका है उनसे मतलब डिफर करती है, एंड थोड़ी कम है उनके हिसाब से उनके कंपैरिजन में। बट स्टिल इसमें मतलब आई डोंट इंक्लूड, मैं उन लोगों को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ मतलब जिन्होंने अगर कोई और डिग्री परस्यू किया है और वो चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूडेड है जिन्होंने मतलब जिनका मतलब डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्सेज जिन्होंने चाइनीज लैंग्वेज का नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे फिर मतलब जो लोग हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है और आप मतलब चाइना, और आप उसके अलावा भी आपके उस डिग्री के अलावा आप चाइनीज लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, फिर भी लाइक काफी सारी अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल होगी। लेकिन अभी जो मैं चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मतलब वो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। सो आई मेरे मेरे मुताबिक ट्रैवल टूरिज्म और इनफॉर्मल इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें जो है जो लोग नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से है and जो जिन्हें चाइनीज बोलना आता है, सो ये फील्ड्स में वो काम कर सकते हैं। ये भी मतलब काफी आई फील मतलब आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं इस फील्ड में, या फिर इसमें जो मतलब और भी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो शायद मेरे नॉलेज में नहीं है। सो दिस इज ओपन फॉर मतलब डिस्कशन और लाइक क्रिटिसिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म में मेरे काफी सारे बैचलर्स के दौरान मेरे काफी सारे दोस्त थे जो ऐसे लोगों को जानते थे कि जिन्होंने खुद से होके मतलब चाइनीज सीखा है, और फिर वो बहुत सारे चाइनीज टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं तो उन्हें मतलब वो दे वर्क एज टूर गाइड्स। एंड काफी सारे लोग मतलब चाइनीज लैंग्वेज सीख के अपनी टूरिस्ट कंपनीज भी ओपन करते हैं। तो इस हिसाब से ये एक ऑप्शन है। सेकंड है इनफॉर्मल इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। सो बहुत सारे लोग मतलब जो इनफॉर्मल इवेंट्स होते हैं जहाँ पे मतलब आपको अपना डिग्री शो करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब वहां पे भी काम आप मतलब इंटरप्रिटेशन और या फिर ट्रांसलेशन का काम आप कर सकते हैं। अ, अम,
इस फील्ड में एक्चुअली नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड तो नहीं कहेंगे, बट स्टिल काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स आर एक्चुअली नॉट सपोज टू इंडिया, मतलब जेएनयू में a lot of students, they are not exactly like have the certification before graduating to interpret or to work as a translator or interpreter. But again, you even as a student you can just start working for these informal things. बहुत सारे exhibitions होते हैं इंडिया में जहाँ पे चाइनीज चाइनीज सेलर्स या फिर मतलब जो भी आर्टिस्ट या फिर बहुत सारे अलग लोग एग्जीबिशंस में आते हैं, एंड वहाँ पे भी काफी इंटरप्रेटर्स की जरूरत होती है। तो उस काम के लिए भी मतलब जो लोग वो काम भी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सो एकेडमिक बैकग्राउंड जो है इसमें काफी सारे मतलब फील्ड्स मैंने अभी ये इंक्लूड की है, एंड आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एकेडमिक बैकग्राउंड को। आई डोंट नो इफ ये हमारे सिस्टम का फेलियर है या मतलब आई डोंट नो, इट्स ये सिस्टम मतलब ऐसा है, बिकॉज इन सब चीजों के लिए आपको एक अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इसलिए मतलब ये जो फील्ड है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास डिग्रीज है, चाइनीज डिग्री या डिप्लोमा है चाइनीज का। सो हम लोग फर्स्ट फील्ड पे जा सकते हैं। सो आई होप माय स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, मतलब? ओके, गुड। सो हम लोग रिसर्च फील्ड की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च इंडिपेंडेंट रिसर्च भी हो सकता है और एकेडमिक रिसर्च भी इस पॉसिबल है, और चाइना रिलेटेड, एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर nowadays. और जो एकेडमिक रिसर्च मतलब वही पीएचडी या फिर मास्टर्स या फिर पोस्ट डॉक, और एकेडमिक रिसर्च आल्सो इंक्लूड्स कि हम प्रोफेसरशिप करते हैं या फिर यू वर्किंग एट अ यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें, वर्किंग एट अ यूनिवर्सिटी और मे बी वर्किंग फॉर अ, आई एम सॉरी ये मैंने इंक्लूड करना मैं भूल गई, लेकिन काफी सारे थिंक टैंक्स भी होते हैं और काफी सारे ऐसे थिंक टैंक्स है जो फोकस्ड होते हैं रिसर्च पे, एक फील्ड स्पेसिफिक रिसर्च पे, और वहाँ पे भी मतलब रिसर्च इस टाइप का फील्ड स्पेसिफिक रिसर्च किया जाता है। और चाइना पे मतलब बहुत सारे ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जहाँ पे मतलब हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं जो है हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, साइंस और ये सारी चीजें। सो आई मीन ये जो है रिसर्च फील्ड, इट्स क्वाइट यूनिक। आई मीन इट्स क्वाइट, आई मीन ये बहुत ही ज्यादा ओपन है, आप मतलब किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली बी it's uh, it's quite funny, like you can actually do research in any field that you feel like, and you can actually be earning from it. But I mean if you are in the academics field ये ज्यादा relevant होगा शायद, लेकिन even if for independent research, a lot of independent research is being done, and उसका भी validity उतना ही होता है जितना एक academic research का होता है. So this is a very interesting and very attractive field, I feel. Yeah, I'll go on to the next one. So
या इट्स ये काफी मतलब ऑब्वियस सा मतलब ऐसा फील है कि अगर हम चाइनीज लैंग्वेज जानते हैं तो हम चाइनीज लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। काफी सारे मतलब रिसेंट पिछले कुछ सालों में देख पिछले शायद 7-8 सालों, शायद ज्यादा सालों में, मतलब अर्ली 2000 से काफी सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन पिछले 5-10 सालों में शायद एक इंक्रीज है लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में। और काफी सारे मतलब लिंक्डइन पे भी मतलब एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कि पीपल आर लुकिंग फॉर चाइनीज लैंग्वेज टीचर्स। सो ये भी एक फील्ड है, एंड देयर इज लाइक पीपल आल्सो हायर प्राइवेट ट्यूटर्स। एंड उसके अलावा लाइक यू कैन जस्ट बी क्रिएटिव विथ योर ओन फील्ड, लाइक इफ यू वांट टू टीच चाइनीज लैंग्वेज, obviously you can teach at universities, but you can also teach at schools, and also like at language institutes, or start your own language school, जो काफी बिजनेस साइड में चले जाएगा इसके। तो um, these are the opportunities that you can get in 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 teaching Chinese language. Next is like this is sort of this is a little funny. बहुत सारे अभी बिकॉज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिस्ट करती है इंडिया में, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड बिकॉज चाइना मतलब ग्लोबली इतना इम्पोर्टेंस है सारे फील्ड्स में चाइना का। सो ऑलमोस्ट सारी ही फील्ड्स में दे नीड चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। सो ये जो मैं आपको मतलब दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे फ्रेंड्स के जॉब टाइटल्स है जो जिन्होंने जो मेरे साथ जेएनयू से ग्रेजुएट हुए। आई होप दे डोंट माइंड इफ दे आर लुकिंग एट इट। सो ये एग्जाम्पल्स है कि आप मतलब इस तरह के जो कॉर्पोरेट जॉब्स है आपको अवेलेबल हो सकते हैं। एंड कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। आप बिकॉज हम लोग जब चाइनीज पढ़ रहे थे, वी नेवर रियली थॉट कि व्हाट काइंड ऑफ आई मीन इसे आई मीन इट्स नॉट नेचुरल। हम लोग इतना मतलब नहीं सोच कर सकते हैं कि कैसा मतलब व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। बट लाइक बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही सारी वैरायटी अवेलेबल है हमें जॉब फील्ड्स में, लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स। एंड जो मतलब लाइक जो इनकम लेवल भी है, लाइक यू कैन जस्ट I mean the even the income is quite good. I feel काफी बिकॉज मेरे क्लासमेट्स जो है जो 2020 में मेरे साथ जेएनयू से ग्रेजुएट हुए थे, शायद ये मतलब सॉर्ट ऑफ डिपेंड भी करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होते हो। तो बिकॉज मेरे क्लास का मतलब अगर कह सकते हैं कि हमारा एवरेज जो स्टूडेंट्स जो अभी जॉब कर रहे हैं उनका पेमेंट है अराउंड average payment is like 6 lakhs, which is kind of good, but it just ranges from 6 to 12, 13, and ये सब है। So corporate jobs are like very good job opportunities, but so मैं तो मतलब एक इस चीज में मैं एक बुरी चीज भी मैंने नोटिस की है, वो है कि बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जिन्होंने चाइनीज में डिग्री करके they were looking for jobs, and they did not really they were not getting a lot of job opportunities like similar to those that my classmates who graduated in 2020 with me got. So ye so I would probably, I mean, because this is like a sort of a failure of our system, so I mean, and maybe this will take some time to change. So मैं एनकरेज करूंगी आपको कि यू गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू लर्न चाइनीज, एंड एंड ऑल्सो लाइक अपना या वही आप अच्छे यूनिवर्सिटीज से अगर करते हैं, सो दैट वुड बी ए जॉब, you too can get these jobs. But then again, this is like a very problematic kind of a statement, I feel. So yes. So
नेक्स्ट फील्ड है जर्नलिज्म. सो बिकॉज चाइना, लाइक आई सेड, मैं काफी बार मैंने एम्फसाइज कर लिया है मैंने ये चीज कह दी है इस प्रेजेंटेशन के दौरान कि चाइनीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चाइना बहुत इम्पोर्टेंट है. चाइना पॉलिटिक्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल एंड सारी ही फील्ड्स में चाइना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड जो चाइनीज लैंग्वेज ग्रेजुएट्स होते हैं, they also have like these opportunities to work in the field of journalism, because I mean, you need these experts in certain fields to work on these certain topics that जो मतलब common लोगों को understanding जिनका नहीं होगा. So if you have studied like if you have done your masters in Chinese or your bachelor's, and you have like you have a very good understanding, and you are like constantly working on the border problems between India and China, then maybe you will be the most suitable person to write about write an article about the current issues that India and China are having. So this is also like a very good opportunity, I feel. बहुत सारे journalists ऐसे भी होता है, like some journalists, they first earn their degree in journalism and then they learn Chinese. So I think, I mean, बहुत सारी places है जो ऐसे Chinese graduates, जो students है जिन्होंने Chinese language में graduation complete किया है, तो उन लोगों को वो ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी. मैंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक मतलब इंटर्नशिप का एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, जिसमें दे वांटेड ग्रेजुएट्स ऑफ चाइनीज स्टडीज, एंड ऑल्सो उन्होंने मतलब 4 or 5 आर्टिकल्स लिखे होने चाहिए. सो इफ राइटिंग एंड इफ जर्नलिज्म इज योर फील्ड, so then I mean, you can, I mean, there are a lot of opportunities that you might get like internationally or India maybe. So translation and interpretation is I mean, wow, I'm so sorry, I did not even realize that I've made a mistake, a spelling mistake in my interpretation. uh, a spelling mistake while typing this out. I'm so sorry for that. So translation and interpretation, ये मतलब when you learn a foreign language, it's like obvious field है जो होता है. And I think I would also like to tell you that there is a lot of Indian literature has been translated into Chinese, but then a lot of Chinese literature has not been translated into any of the Indian languages. Like very little literature has been very little Chinese literature has been translated into Hindi, Marathi, or any of these languages. So we need more people who would be translating, who take this task of translation, and it is a very good field, I would say. If we take, I mean, a literature can also be like a window to looking at people, like how people in a certain country are like understanding their culture and everything. So काफी सारे translators की हमें इस समय like जरूरत है. और interpretation भी काफी मतलब popular है, like a lot of you can with these translation and interpretation certifications, or you can or degrees, you can actually work in, I mean, you can have like an excess of opportunities, like you can work in business field or in many other fields, like academically भी आप और इसके अलावा भी मतलब like academics में भी आप ये कर सकते हैं. और I don't know why I mean, a lot of academicians, like बहुत सारे professors और research students ये projects में काम करते हैं. और मतलब academic translations को भी काफी value होता है, उसका एक अलग value होता है, because you have actually studied that topic, and then
आप उस अंडरस्टैंडिंग को लेके उस ट्रांसलेशन को कर रहे हो। तो वो एक ट्रांसलेशन काफी अलग होगा। अगर आप मैंने एक मतलब किसी का बुक देखा था, उन्होंने चाइनीज किसी पोएट के बुक्स पोएम्स को ट्रांसलेट किया था, एंड शी ट्रांसलेटेड इट लाइक शी फर्स्ट गूगल ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, and then she translated then she rearranged those poems, like she wrote it in better English according to this lady. I would not like to take her name. So this is something that would not be considered as a very good translation, and therefore like people with a good understanding of the language and culture would make like very good translators. And I and like I said before, like there is a need for more translators in our country to translate Chinese language literature into Indian in any of the Indian languages, all of our beautiful many Indian languages. And also like independent translation and interpretation भी बहुत popular field होता है. Like I said, you can work in the business field or corporate level jobs as well. So we can move on to the next one. Next is government jobs. So बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कोई भी जॉब करने के बाद, मतलब कोई भी डिग्री करने के बाद दे आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. एंड बट देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक यू टू नो कि आफ्टर इफ यू हैव स्टडीड Chinese language for your bachelor's, and if you are thinking कि मैं Chinese language पढ़ने के बाद I would go for UPSC, and then I would probably, if I crack UPSC and then अगर मुझे foreign service में जाना है, तो मैं मतलब I can choose Chinese, then I can choose Chinese language and I would probably get a head start. But this is like something that my professor told me in the first class कि you would not get the job, you would not be posted in China, because they would believe that you have softened a bit about the country, about China. So I mean UPSC kind of people with a UPSC kind of a dream, like this would not exactly be for you. यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैबिनेट सेक्रेटरी और PMO में I know some people who have gotten job opportunities here, and the requirement for these is you should have at least a bachelor's degree, and your Chinese should be excellent, or and also you could I mean PhD or master's level of education in Chinese is also accepted for these jobs. And like we also have these intelligence services. So now I mean इसके लिए भी मतलब Chinese काफी important है, and as we know, like because of how complicated India and China's relations are. So these are the fields, I think. Sapna di, how much more time do I have? बहुत टाइम है आपके पास, मतलब आप ले सकते हो। अभी कितना स्लाइड बाकी है अभी? ज्यादा नहीं है, 3-4 चलेगा, आराम से। okay. So that was my last slide. I thought मेरे पास और है. So इसके अलावा भी मतलब like I would not move to the thank you just yet. I had listed all these things like commercial law, and which I did not include, which I do not have the time to include in my presentation, which I apologize for. So I mean, you can actually get a degree in Chinese studies and then go for like commercial or corporate law, and then वो भी एक field हो सकता है. So with this, I mean बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मतलब आप क्यों चाइनीज पढ़ रहे हो, उसमें क्या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है. एंड ये मतलब बिकॉज ये बहुत कॉमन नहीं है अभी भी. काफी लोग पढ़ते हैं बट फिर भी इंडिया में अभी काफी कॉमन नहीं है ये, तो इसलिए मतलब लोग नहीं जानते हैं ये सारी चीजें. बट एक्चुअली इन चीजों को लेके भी हम लोग काफी क्रिएटिवली अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं.
बहुत सारी कंपनीज चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर करती है, एंड बिकॉज ऑफ मतलब इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का मतलब चाइनीज लैंग्वेज की कितनी ज़रूरत है, उसके वजह से भी मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है इंडियन जॉब मार्केट्स में और इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स में भी। यहाँ पे मतलब मैं अभी जर्मनी में पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जिन्होंने इंटर्नशिप किया है BMW ये सारी कंपनीज में, एंड उनका मतलब चाइना से रिलेटेड कुछ था इंटर्नशिप। और मतलब ये शायद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री प्रिविलेज भी होगा कि मतलब हमें शायद मतलब या फिर इंडिया में भी मतलब हमें ये सारी चीजें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्ली मिल सकती है, बट fields are like not limited, I would say, and you can always be like as creative as you want with all these fields. So I think I would leave the floor open for any questions now. And yes, thank you for your attention. Chaitanya, okay. चीनी भाषा कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज को। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी चाइनीज डिग्री होनी चाहिए। यू कैन आई मीन किसी को मतलब कोई अपना माइक ऑन करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं मुझे। कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह जो जॉब कैबिन आई डोंट रियली नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज कॉल्ड, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो जॉब्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि यू शुड एट लीस्ट हैव अ बैचलर्स इन चाइनीज और a master's in Chinese, and your Chinese should be excellent. But I'm not sure ki if you have some other degree, but if your Chinese is fluent, then maybe if you can like provide the certification. I'm not very sure if we can still apply for that if you have some other degree and if your Chinese is fluent. Undergraduate, you all have very interesting questions. So I will take this question by Aman Chanwaria. अंडर एंट्रेंस में चाइनीज लैंग्वेज के क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? सो ये मतलब हाँ, ये जेएनयू के लिए क्योंकि पूछ रहे हैं, तो मतलब जेएनयू के लिए क्लस्टर वाइज होता है डिवीजन। अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स है आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो साउथ एशियन मतलब ईस्ट एशियन जो लैंग्वेजेस का क्लस्टर होता है उसके लिए लाइक यू हैव टू स्टडी overall about overall general and knowledge, and also like the current affairs of East Asia, and मतलब जो भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में, वो सब चीजें। Why do you study, Piyush Jinde, why do you study in German university? Why not in China? So I graduated in 2020. And after 2020, I was supposed to go to China, but the pandemic happened. And also like 2020 was the time during which like 20 when India China's relation got were quite deteriorated. So I because of which a lot of scholarships were cancelled, and also still China is not allowing hasn't allowed a lot of any international students to study in China at the moment. And it's right now it's under I think it's still under lockdown. So right, there are not many opportunities or scholarships to go to China. And why I am studying at a German university is because
I was already pursuing a master's in Chinese at Jawaharlal Nehru University. I did my first year of master's, but I was more interested in studying the Chinese history part, and the course that I'm enrolled at the moment, it um, uh, offers a master's degree in Chinese history. So that is the reason why I'm here. I'm not sure if we can get the government job by HSK exam. I'm so sorry. I think you will have to look it up yourself. How to learn Chinese language and how to prepare. Um, I cannot see your name, CPH1809. Um, how to prepare? Can you please tell me what are you preparing for? And learning Chinese language, I mean, it's a very wide question. Like, you go to a school that teaches you Chinese language, like, I don't know. Can you, I mean, क्या आप अपना सवाल थोड़ा सा मतलब और डिटेल में पूछ सकते हैं ताकि मतलब मैं उसे आंसर कर सकूं? और अगर आप मतलब आप में से किसी को अगर माइक ऑन करके भी पूछना है, सो इट विल फील लाइक कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन हियर. Any more questions? आप सबको अनम्यूट भी किया जा सकता है, तो आप अपना माइक शुरू कर सकते हो. अनम्यूट का ऑप्शन शुरू है, प्लीज अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो मैम से. सुमित बोलो. Yes, they use Chinese language in Taiwan. The script that they use is actually, but I forgot to mention this before in my presentation. There are two kinds of scripts. One is simplified script and the other is traditional script. So in Taiwan, they use the traditional Chinese script, but and they also have like different dialects of Chinese language. So in Taiwan. No, they speak in Vietnamese. They don't speak in Chinese. I mean, I'm not aware. I mean, there might be a diaspora in Vietnam. Ma'am, मुझे सायूरी बोल सकते हो आप, प्लीज मैम मत बोलो. आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. depending on courses, it will be salary, ma'am. In foreign language only. I mean, if teachers will be for them different. If tourism, for tourism we have to do it, for that it will be different. Actually, we all learn Chinese language in the same course, and there is no like distinction as such. There are no such courses offered in India that are like Chinese language specifically for tourism or anything like at university level. So we all learn the same at the university. There are no such different courses. Have I answered your question? Or was there anything else that you wanted to ask? Can you please ask your question again?
Delhi University, I'm not sure uh, how to get admission in Delhi University. I think you guys might know it better than me. Divyanshu Kumar has asked, is it costly to study abroad? Depending on where we are studying, yes, it is costly to study abroad. If we are studying in Germany, then if we do not have a scholarship, we have to pay for the expenses. Um, we have to only pay for like the living expenses by ourselves. The We do not have a tuition fee in Germany, but if you go to the other parts of the world, so you have to pay the tuition fee and also for the living expenses separately. Actually, don't I have never bought, I don't think I have any HSK books with me. Um I just studied it from my textbooks at my university, but actually I did have, I had like um, I studied for HSK 4 and I had some book for it. I'm sorry, I don't remember the name of it. I will share it. I'll actually create a PDF or something where all the data that I just mentioned is like is I'll create like a in a systematic way. I'll put it in a paper or something on upload it somewhere. Yeah. Uh, I do not know if there is age limit for bachelor's in JNU because I knew somebody who was almost 40 and still doing their bachelor's in JNU. I don't think there is. कर्मना Yeah. खाली कर्मना जुने पोरं नाही तर काय कर्मना And Nam, Namdev Kamle, do you have a question? Okay, he's not speaking anymore. सुमेध, चाइनीज एंड जापानीज में क्या डिफरेंस है? चाइनीज चाइना और ताइवान में बोली जाती है, वो चाइनीज लोगों ने बनाई है, और जापानीज जापान में बोली जाती है। ये दो अलग लोग हैं, और चाइना और जापान दो अलग देश है, और ये दो अलग भाषाएं हैं कंप्लीटली। अगर मतलब रिटन स्क्रिप्ट में देखें तो चाइनीज की तरह ही जापानीज की बहुत सारी जो रिटन स्क्रिप्ट्स है उसमें से एक कांजी है, और कांजी स्क्रिप्ट में चाइनीज कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। बुल्लू रोहिदास, when will I go to JNU? Can I learn Chinese language? I'm preparing for CUET exam. If you have applied for the Chinese language program at JNU, and if you give your exam and if you pass it, then you can obviously study Chinese language there. You have to pass the entrance exam for that. And for that, I wish you very best. And yes, I do not know what CUET exam is, but good luck, best wishes for that as well. What do you want to know about Chinese culture, Monty? लोकेश वर्मा, JNU में चाइनीज लैंग्वेज में एडमिशन कैसे होगा? एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी होगी मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, और फिर आप चाइनीज लैंग्वेज में और वो एंट्रेंस पास करने के बाद आप चाइनीज लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं।
Divyanshu Kumar has asked um, um, on in the YouTube comments, I think. Is it more difficult to learn the Chinese language than others? So Chinese language, like I said before, it does not follow the it does not have like I mean it's not similar to other languages. It's quite different, and so it is like, according to Google and according to some researchers and articles that we come across on Google, that uh, yes, Chinese language is considered to be more difficult than um, um, other languages. But it's not impossible to learn it, because a lot of people learn it, and I think you too can do it. Like, I think Divyanshu Kumar has already mentioned that he's interested in learning Chinese. Um, I studied Chinese for my graduation. Priya Wankhede, can I go to Chinese university for learning Chinese language after graduation? Uh, yeah, you can. Of course, you can. There are many universities like Peita, uh, Peking University, Tsinghua University, Renmin Tashue. So all these universities, they are always on in the top ranking in the world QS ranking system or something. And there are a lot of universities that don't have, like, they are not quite often mentioned, and but they still like have they still offer Chinese language graduate courses for students, bachelor's or undergrad courses, bachelor's or post graduation programs for international students. So yes, you can go to China, and until recently there was a I think there still is a Ministry of Human Resource Development scholarship for people who wish to do their bachelor's in China. So you can look it up as well. Actually, I have. I'm so sorry, Preeti Wankhede. Can you tell me what process to go there? What is the process to go there? So I am not really aware of what is the process. What's the process to get into a Chinese university? Are there any more questions?
If you have any more questions, you can just type them out in the chat box. तो अगर किसी को क्वेश्चन अभी है तो प्लीज आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो, या यूट्यूब पे भी चल रहा है हमारा तो यूट्यूब पे भी कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो प्लीज आप हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं हमारा सेशन। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं और आप अपना क्वेश्चन दीजिए, नहीं तो फिर हम एंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है COET एग्जाम के बारे में नहीं जानती हूँ मैं। वो यूनिवर्सल एग्जाम है, उसका अभी प्रिपरेशन चल रहा है। I'm sorry, मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगी, मैं जानती नहीं हूँ उस एग्जाम के बारे में। अगर और क्वेश्चंस है आपके तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। CUET के बारे में अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप क्वेश्चन डालिए कम्युनिटी पेज पे, फिर हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये हमारी डिजिटल नालंदा की वेबसाइट है, ठीक है। सयूरी, हम यहाँ पे एंड करते हैं हमारा सेशन। यस, थैंक यू वेरी मच सयूरी, आपका सेशन अच्छा रहा। और आप ये जो प्रेजेंटेशन अगर हम मैं देना चाहती हूँ तो वो थोड़ा सा आप बोल रहे हैं कि ऐड करना है तो ऐड करके मुझे सेंड कर दीजिए। Thank you for the opportunity and thank you everyone for listening. So yes, we can end it here.